Today, I would be speaking on the issue of enhancing social awareness for the heritage things of a place. This is part of the paper first of the fourth semester of heritage management. There, a heritage management professional has been required to be aware of different techniques to enhance the public awareness for the heritage properties. The public awareness for heritage property is very important as far as the conservation and preservation of the heritage property is concerned. Conservation and preservation of the heritage property is very much dependent on the amount of social awareness enhanced in the society. There are agencies in India and abroad which work for the enhancement of the social awareness of heritage properties of a particular place. Like in India, there is Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India from almost mid of the 19th century, they have been working to identify the heritage monuments spread all over India, and they have worked a lot to identify and to work for the preservation and conservation of the heritage monuments. If you take visit of India and move from east to west and south to north, each state of India, from J&K and Ladakh to Kerala to Tamil Nadu, every state to Assam, to different states in the northeast, to Sikkim, to Bihar, you would find heritage properties, they are spread there. And the heritage properties are of very ancient nature. They are from something roughly before the Christ era, and some properties are there which emerged in after Christ era. And because of the role played by Archaeological Survey of India, and after independence, because of the role played by the government of India and the state governments, the heritage properties are
preserved. And during British rule, there were certain laws passed by the colonial government to see that the heritage properties are conserved and preserved. And after independence, we have laws which identify the heritage monuments in a city or in a place. And then after identifying, the object is earmarked as a heritage monument, and the norm, which is very much obviously known to the heritage management students who did their second year classes with Dr. I should say Dr. Jwala Madhur, man, who had in a very detailed manner told about the rules and regulations and laws which are there to conserve and preserve the heritage monuments. And these laws are there. But if you take the example of any city, like particularly if you take the example of Varanasi, Varanasi, which is a city of tangible and non-tangible heritage properties. In the management, heritage management professionals, the students, they know what is the meaning of intangible heritage property and what is the meaning of tangible heritage property. How the intangible aspect of the heritage properties have been emphasized by the international bodies, particularly UNESCO. UNESCO has very much given intellectual impetus, intellectual backing to see that the heritage monuments which are of global nature, which are of having outstanding universal value, OUV, the heritage monuments, tangible and non-tangible, if they have outstanding universal value, about which you have heard the lecture of Dr. B.R. Mani, who was the Joint Director of Archaeological Survey of India, how Nalanda was piloted as a case for consideration or for its being designated as UNESCO outstanding value, outstanding universal value heritage thing or property. And you know how the whole case was placed in Turkey before the international body of the experts, and then Nalanda was declared, although Nalanda is something like a place which has been ruined in the 12th century by the attack of Bakhtiyar Khilji. But whatever the things which are left there, the property which is there, it is called the property, heritage property. So the historical narratives and the related things were placed and piloted before the international experts. Initially, the experts from Japan, they did not accept its OUV, outstanding universal value, but when it was again
reviewed by international experts in Turkey, then it was okayed as UNESCO site of World Heritage. So likewise, something, the tangible heritage properties are there in India, recognized by UNESCO, and when a property is recognized by UNESCO as a heritage property of outstanding universal value, then that property is given fund by the United Nations, UNESCO, and that is preserved. You know, in Agra, there is Fatehpur Sikri, there is the fort of Agra built by Akbar, and there is Taj Mahal. These are the heritage properties of outstanding universal value. They have been designated as UNESCO World Heritage Sites. So I was just saying that how there are different agencies which work for the dissemination or spread of the knowledge of or the awareness of the heritage properties. And I mentioned in that context the role played by Archaeological Survey of India and the second agency, you can say, UNESCO. UNESCO has been playing a very vital role in the direction of preservation and conservation of the properties which are of universal value. These days, there are attempts to place the banks of Ganges River in Varanasi to be considered for being declared as UNESCO heritage properties because of the ghats or the banks being more than, some of the banks being more than 200 years old. Like, you know, there is a Chet Singh Ghat. Chet Singh was a local jamindar around 1772-74 till 1780. Then he had a fight with Warren Hastings and then he left Varanasi. But there is a Chet Singh Ghat. If you visit Ganga Ji and from Assi, if you travel to Dashashamed by boat, you would find Chet Singh Ghat, which is more than 200 years old, and it is a fit case for UNESCO World Heritage Site. Likewise, in Varanasi, you would find different ghats. They were produced in the form of the drawings by one, I should say, a polymath. Polymath is a person who is expert in multiple fields. He is a mathematician, he is an architect, he is a technician, he is a metallurgist, he is a decipherist, or he who could read the Brahmi script. His name was James Prinsep, who was here in Varanasi as essay master. Essay master was in charge of the minting of the coins. The house where the coins were minted in Varanasi, that house is still preserved, not I should say preserved, but still there, waiting for someone who is a professional heritage management personnel to go there and say that, look, this is a heritage property, it should be preserved. It is in a very dilapidated position, just on the other side of the very
seven-star hotel of Varanasi, Taj Ganges earlier it was called. It is called Gateway or something like that. So that James Prinsep in 1828, that is now 2022, in 2028, it would be 200 years. So in that period, he had drawn the map of Varanasi, and particularly the map of the ghats of Varanasi. The drawings he did, that book is very much available. And that is something like an evidence of the antiquity of the ghats in Varanasi. And there are also paintings which were found of around 1780 or 1790. There are paintings in the British Museum and published in Varanasi. It can be had from the publisher Pilgrim's publication. There someone from the opposite bank of Ganges from Varanasi, on the eastern side of Varanasi, someone did a painting of Varanasi from the location of the sand there on the other side of Ganges. So those paintings are there which speak about the ghats, and there some ghats are pakka ghats, means made from the chunar stone, but there are still the place which we these days recognize as Rajghat, that is Malviya Bridge. Their houses were shown as kacha houses built of mud. So I'm just saying that how Varanasi, now the efforts are going on by the government agencies. Actually, if any property is required to be declared as World Heritage Site, then the government agency should sponsor the case of the property. And the government agency which is earmarked for this work is Archaeological Survey of India. So these days work is going on to collect evidences so that the ghats could also be declared as World Heritage Site. As we have in Sarnath, the Dhamek Stoop is there, which is almost before Christ era thing, which has been preserved by Archaeological Survey of India, the central government's agency, and also the Ashokan pillar in a broken form is there. And if you happen to visit that area, I think some of the students would have visited, then you would find the attempt by the central and the state government to make people aware of the heritage things which had the antiquity in very, very past. In Sarnath, there is a museum. In the museum, several things which were found in the vicinity of Sarnath, they are preserved. And every day there is something like a light and sound program in Sarnath going on. And there is also something like a declaration or announcement or something like an introduction which is done in the voice of Amitabh Bachchan. So through that light and sound program, the awareness about the heritage value of Sarnath is very much spread. So the awareness about the antiquity and the importance of the heritage monuments of Sarnath is very much necessary, so that the people could visit there from different parts of India and abroad, and then through that visit, through the arrival of the visitors,
the revenue could be earned so that the property could be preserved, or the attempts be made by the agencies which are involved in the conservation and preservation to have something like a self-sustained economic status to preserve that. There are other agencies also in India. Another agency which came into existence is something like an autonomous body, independent of government. Although when it came in 1984, that agency is called INTACH, INTACH. So its president was the Prime Minister of that time, Rajiv Gandhi. This institution or this body is active all over India, INTACH. And Indian National Trust for Culture and Arts, something like that. So how INTACH has done, I should say, very valuable work in the direction of making any city, not only any city, I should say, the old cities, they have developed literature. They worked for identifying the properties which are of heritage value, and for every city they have come up with something like a detailed literature in collaboration with the teachers or the experts, the professionals, the archaeologists, the engineers. They have come up with the help of these professionals, something. They produce literature about, I think, almost all the heritage cities of India. If you go to the INTACH literature, then you would find something like a thing which is there about the heritage properties of a city. So I mentioned about Archaeological Survey of India, then UNESCO, then INTACH. Then I think these days, for the last, I think, 20 years, I should say, the heritage management schools and studies are getting more and more popularities these days. And these heritage management studies and centers and the students in different parts of India, particularly in Delhi and in Ahmedabad, we have heritage management schools, which are sometimes called institutes. And there is IGNU, Indira Gandhi National Open University. They're at the graduate level. They run the courses of heritage management. And in, I should say, all the states of India, you have the heritage courses for the enhancing awareness of the students at the 10th level or even before 10th level. They have attempts to make aware the younger generation about the heritage things. So the awareness is something like a mission which should be observed. Like in Varanasi and for other places also, like making regular visits, inviting the concerned persons or the common people to have something like a walk around the properties, heritage properties. Like there are attempts in Varanasi on the basis of religious orientation and also on the basis of the state archaeology department to have some times or some point of time or some days in a year marked for heritage activities, where the people are
prompted to take something like a visit of the ghats of Ganges, to take a visit to the different monuments, like the monument which is called the fort at Ramnagar Fort. There are attempts to take the visitors to the place where our illustrious Prime Minister of a very short time, Lal Bahadur Shastri, passed his childhood and student life. Up till graduation, he was there at Ramnagar. So his house is there. I have visited that house. It has been preserved and conserved, almost more than 100 years of age. If you visit that house, then you would find that how about 100 years back the people were residing and how the houses were there and what were the Vastu principle involved in that house. When I visited that house, then I looked that house from the angle of Vastu, traditional Vastu. Then I found that Lal Bahadur Shastri's house was very much in accordance with the Vastu principle as enunciated in the Sanskrit literature, in our Sanskrit books. His house was north facing and the main door was from just mid of the north, and in the mid of the house there was something like a very good angan or open space. In the traditional Vastu system, an open space is called the Brahma Kshetra. Every traditional house based on the principle of Vastu should have mandatorily something like an open space, which is called Angan or which is called Brahma Kshetra. So in Lal Bahadur Shastri's house, there was Brahma Kshetra. So how that very heritage monument, if Lal Bahadur Shastri's house is considered as a heritage monument, and it is, how they are making awareness of that. So every year when there is 2nd October, the birth time of Lal Bahadur Shastri, then they invite people to come there and to talk or to have discussion and discuss about Lal Bahadur Shastri's tenure and the things like that. Now in Varanasi, there is, of course, the governmental efforts to make aware the people of different parts of India and world aware of the heritage value of Varanasi. There are attempts, but just I should submit that Varanasi herself has something like an attraction, which if awareness drive is done, it is very good. But suppose if there is nothing like an awareness drive, then Varanasi herself has something like a peculiar beauty which attracts the visitors from all over India and the world. Because of the pandemic, the visitors were less and less. But now in the wake of the end of pandemic, it seems that the heritage considerations which are there, or the heritage value which is very much preserved in Varanasi, that would again be visited by different visitors from all over the world and India. So today I just discussed about the heritage, about the attempt to enhance the heritage awareness and what should be the steps in that direction. So I think with these words I should not be speaking more.
I have decided that I should be speaking 25 to 30 minutes, and then I would ask my students to come up with the questions if they have. So if you have anything like any suggestion about the enhancement of the awareness of the heritage value, so if you have any suggestion or if you have any question, you are welcome. The students of heritage management, they are welcome to ask any question about how to enhance the awareness of the heritage properties of Varanasi. One thing which I should have told, or I told in an indirect manner, that to enhance the heritage value of a place, there should be attempt of identifying the things which are of heritage value, which I mentioned that INTACH is very much doing it, Archaeological Survey of India is very much doing it, and they are, although INTACH is something like a private body, Government of India's Archaeological Survey of India and the state government's Archaeological Survey, that is the archival department of the state government, they are there to identify the properties which are of outstanding universal value or which are of heritage value. But apart from that, if my students, if you can come up with your suggestion regarding how to enhance the awareness about the properties, the heritage properties, tangible and intangible, then you are welcome to suggest, to come up with your ideas. Can you hear me? Is everyone listening to me? क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बच्चे लोग? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक बात है. तो आप बताइए कि बनारस में हेरिटेज मैनेजमेंट के जो या हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को किस तरह से उनके बारे में लोगों में चैतन्यता प्रदान की जा सकती है, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप कुछ सलाह दीजिए कि हेरिटेज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में लोगों में अवेयरनेस के लिए कौन से कदम उठाए जाए. कुछ सलाह दें, कुछ ऐसे सोच करके बताइए. जी, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का यूज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो अगर ऐसे किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी को सब लोगों तक पहुंचाना है तो हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं. सोशल मीडिया के थ्रू उस जगह के बारे में या उसके कंडीशन के बारे में सबको अवेयर करा सकते हैं. ठीक बात है. ये बिंदु मैं नहीं एम्फसाइज कर पाया था, आपने इस बिंदु को बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप कोई एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें, उसके बारे में पूरी डिटेल सूचना इकट्ठा कर लें और उस पूरी डिटेल सूचना को आप सोशल मीडिया पर डालें और उसको, उससे लोगों में एक वाइड अवेयरनेस, क्योंकि आजकल इंटरनेट वगैरह के माध्यम से बहुत सी चीजों को लोगों को बताया जा सकता है और लोग जानेंगे तो फिर उनको ये होगा कि भाई इस साइट को हमें विजिट करना चाहिए. ठीक बात कहा आपने कि सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए. और बताइए, और कुछ? गुड आफ्टरनून सर. अब बताइए सर, जैसे ऐश्वर्या ने बताया कि सोशल मीडिया का हम यूज कर सकते हैं, तो सेम उसी तरीके से सर हम कहीं ना कहीं कल्चरल इवेंट्स अगर हम करा सकते हैं जिससे लोग अवेयर होंगे, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कोई भी कल्चरल इवेंट हो, क्विज हो या किसी भी तरीके के जिसमें लोग एक्टिविटीज जिसमें इन्वॉल्व हो सके, तो इससे भी एक अवेयरनेस आए. कल्चरल इवेंट्स, आपने कहा कल्चरल इवेंट्स कराई जाए. ठीक बात कहा कि कोई कल्चरल इवेंट जो उस मॉन्यूमेंट से रिलेटेड हो, वो कल्चरल इवेंट. जैसे बनारस में बहुत सी कल्चरल इवेंट होती हैं, जैसे महाशिवरात्रि का समय आता है
तो एक खास प्रकार के बनारस की परिक्रमा लोग करते हैं, जिसे पंचकोशी की परिक्रमा करते हैं। तो पंचकोशी की परिक्रमा के माध्यम से बनारस के जो 5 कोस या 25 कोस का जो पूरा इलाका है, जो मान्यता है कि उस इलाके पर चलना चाहिए और उसके तमाम मॉन्यूमेंट्स वहां पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कल्चरल इवेंट है जिसके माध्यम से आप अवेयर करते हैं लोगों को भाई कि ये हमारा जो हेरिटेज, ये रास्ता है जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। या इसी तरह से अपने यहाँ जो त्योहार वगैरह होते हैं, जैसे जैसे बहुत से त्योहार हैं, होली वगैरह के त्योहार हैं, दीपावली के त्योहार हैं, और भी बहुत से जो हमारे साल भर त्योहार ही त्योहार है। हिंदू लोगों के तो बहुत से त्योहार हैं। तो उन त्योहारों पर अभी नवरात्र का त्योहार आएगा। तो नवरात्र के त्योहार के दौर में जो हमारे काशी में दुर्गा जी की के 9 स्थल हैं, उन 9 स्थलों के बारे में, जो कि आपके देखते हैं कि जो गोलगड्डा वगैरह का जो इलाका है, या जो नई सड़क है, या जो राजघाट के पास का इलाका है, वहां पर शैलपुत्री देवी का मंदिर है। तो वहां के शैलपुत्री से लेकर के प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो मैंने 9 दुर्गा का नाम लिया, ये भी कल्चर से रिलेटेड है, और इनके मंदिर, इनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो बहुत पुराने समय से हैं। तो आपने बहुत सही कहा अंकित कि कैसे जो है इन सभी से जो इन्वॉल्व, जो इसमें कल्चर इन्वॉल्व है, संस्कृति इन्वॉल्व है। उसी तरह से आप देखेंगे कि पांडेपुर के पास जो गाजी मियाँ का एक स्थल है, जो सालार जंग करके एक व्यक्ति, जिसकी समाधि या जिसकी कब्र वो आपके बहराइच में है, उससे भी रिलेटेड बहुत सी कहानियां हैं, जो एक कल्चर के रूप में उस जगह को लोग प्रिजर्व करते हैं, कर सकते हैं, जो कि हर साल गाजी मियाँ की बारात वगैरह के बारे में चर्चा होती है। इसी तरह से बनारस के बहुत से स्थल हैं जो बड़े कल्चरली जो है बड़े ही रिच स्थल हैं, बड़ा सांस्कृतिक ढंग से उनसे कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन सभी स्थलों के जो सांस्कृतिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, उनको जोड़ करके लोगों में बताया जाए, और फिर साथ ही साथ उनको उनको जैसे कहते हैं ऑब्जर्व करे, उनका ऑब्जर्वेशन हो, ऑब्जर्वेशन में मनाया जाए उनको। कैसे, जैसे बहुत से हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है, जैसे गंगा जी के पूजा का एक कल्चर है हमारे यहाँ, बहुत पुराना कल्चर है, जिसमें गंगा जी पर एक माला, आर पार की माला कहते हैं उसको, जब विवाह होकर के आता है तो बहुत से लोगों की मान्यता होती है कि गंगा जी को साड़ी चढ़ाएंगे और फिर आर पार की माला करें, चढ़ाएंगे। तो बहुत बड़ी जो है तो वो पुष्प की माला जो है तैयार की जाती है, और वो गंगा में इस पार से उस पार तक वो लोग ले जाते हैं। तो ये एक ऐसा कल्चर है जो अभी भी जीवित, मतलब ये कल्चर डेड नहीं है। और बनारस को आप कह सकते हैं कि बनारस एक बड़ा ही जीवंत संस्कृतियों का, संस्कृति का नहीं, संस्कृतियों का एक शहर है। और लोग कहते हैं, और ये सही भी है, कि बनारस में जो अर्बनाइजेशन हुआ, जो नगरीकरण हुआ, उस नगरीकरण में कुछ बनारस का एक विशेष आकर्षण था, इसकी जो इनटेंजिबल हेरिटेज वैल्यू रही, जो छूने से दिख नहीं सकती है, लेकिन एक इनटेंजिबल हेरिटेज वैल्यू काशी की रही, कि किस तरह से काशी में लोगों ने कहा कि जहां काशी विश्वनाथ है, जहां अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ का निर्माण किया है, जहां पर काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ, जो पहले अहिल्याबाई के जो बनाए हुए शिव मंदिर थे, जो 3000 स्क्वायर फीट के थे, अब वहां पर 5 लाख स्क्वायर फीट का वो इलाका बन गया है। वहां पर विजिट करें और देखें कि कैसे इस भाव से भी लोगों को बताया जा सकता है, वहां पर ले जाया जा सकता है, विजिट कराया जा सकता है, इस आधार पर कि देखिए कि कैसे हमारे प्राचीन जो वास्तु शास्त्र हैं उनके अनुसार किस तरह से काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ,
और काशी कॉरिडोर जो एकदम प्रारंभ से, जहां पर आप कहते हैं कि जो गोदौड़िया से जो ऊंचाई पर चढ़ते हैं और चढ़ के जैसे नीचे उतर करके पहले जाते थे, तो उस स्थल से, खास तौर से उस स्थल पर जो सत्यनारायण का मंदिर है, वहां से लेकर के पूरी जमीन को जैसे साफ किया गया हो, और वहां से लेकर के और गंगा जी के किनारे तक के स्थल को कैसे बनाया गया, और अब बहुत से लोग वहां बैठ करके किस तरह से वहां पूजा पाठ कर सकते हैं और गंगा जी का दर्शन कर सकते हैं। गंगा जी से सूर्य की किरणें कैसे छू करके काशी कॉरिडोर में आती हैं। इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस करके, और ये अवेयरनेस करके कि कैसे उस स्थान पर विजिट करने से ही जो काशी का एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, वो है कि काशी कैसे एक संदेश देता है कि आपको जो अंदर का ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं, जो शिवत्व का ज्ञान है, उसका संदेश काशी और काशी विश्वनाथ अपने आप में लिया है। इस बात के भी प्रचार करने की बहुत जरूरत है, जरूरत भी है। और हम तो देख रहे हैं कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का एजेंडा में नंबर 1 एजेंडा ये रहा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैसे 13 दिसंबर को तो काशी कॉरिडोर की स्थापना होती है, और उस स्थापना के साथ तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसको लोकार्पण करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर आकर शिव जी को जल चढ़ाते हैं। बस अकेले यही नहीं करते हैं, इसके साथ जैसे पूरे देश भर के जो धर्म संसद है, पूरे भारतवर्ष की धर्म संसद कहिए, धर्म संसद में उसे कहूंगा कि देश के विभिन्न इलाकों के जो महामंडलेश्वर हैं, जो भगवान का ध्यान करने वाले लोग हैं, उन सबको इकट्ठा वहां करते हैं। और उस इकट्ठा करके जिस तरह से उन लोगों का अनुमोदन प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब ये काशी कॉरिडोर की स्थापना हो रही थी तो इसमें शिव जी के मंदिर से लेकर गंगा जी के बीच में बहुत अधिक ऐसे मंदिर और भवन निर्माण हो गए थे, जिनको कुछ लोगों ने कहा कि ये काशी की धरोहर है, यही काशी की हेरिटेज है। ये एक बड़ा बोल्ड और साहस का कदम था। ये भी बहुत बताने की भी जरूरत है, समझाने की जरूरत है, और लोग वहां पहुंचकर समझ भी जाते हैं कि नहीं, वाकई ये काम बहुत अच्छा हुआ है कि उन लोगों को जो वहां पर किसी किसी खास समय पर वो अपना भवन बना लिए थे, अपना मंदिर बना लिए थे, उनको कंपनसेशन दे करके उनको वहां से कहीं और कहा गया कि भाई आप बना लीजिए अपना। और उस स्थल को एक, जैसे हमारे वास्तु में कहा जाता है कि पृथ्वी को समथल बनाइए, और समथल बना करके तब अपना निवास स्थान करिए, चाहे पूजा का स्थल हो, चाहे और भी किसी तरह का हो। अगर निर्माण कार्य करना हो तो ये बात राजा पृथु करके हैं, जो पृथ्वी के राजा हैं, उनको ब्रह्मा ने कहा कि आप पृथ्वी को समतल करके और तब वास्तु का निर्माण करें। तो आप देखेंगे काशी कॉरिडोर एक समतल करके पश्चिम की ऊंचाई लेकर, पूरब की ढलाई लेकर गंगा जी के किनारे तक वो पहुंचता है। और उस स्थल पर गंगा जी और इक्विनॉक्स के दिन, जब दिन और रात बराबर होती है, तो किस तरह से सूर्य परपेंडिकुलर वहां पड़ते हैं, जिसके बारे में वास्तु के पुस्तकों में कहा गया है कि ऐसे स्थल पर जाने से ही आदमी का बहुत बड़ा कल्याण होता है। कल्याण की बहुत सी बातें हैं उसमें, कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे यहाँ इंटेंजिबल हेरिटेज में ज्ञान को रखा गया है कि वो ज्ञान एक तो संसार का ज्ञान होता है, जिसे कहते हैं स्पेस टाइम और मैटर का ज्ञान, और एक होता है स्पेस टाइम और मैटर से बियॉन्ड का ज्ञान। स्पेस टाइम और मैटर के बियॉन्ड, जिसे आप ट्रांसेंडेंटल या पारलौकिक ज्ञान कहते हैं, जो एक अनुभव करने से आता है, एक अनुभव हृदय से। और उसमें अनुभव में होता है कि भाई, जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भाई हम शरीर नहीं है, शरीर तो वस्त्र है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम अहंकार नहीं है, हम इससे परे एक शुद्ध चेतना है, वह है। तो इस तरह का जो ये हमारा एक इंटेंजिबल हेरिटेज है, ये बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन इंटेंजिबल। आप देखेंगे कि चाहे आपके उपनिषद हो, चाहे आपके वेद हो, या आपके बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, इन सब में इस इंटेंजिबल ज्ञान की इसकी चर्चा है।
तो काशी उस ज्ञान का संदेश भी देता है। इसके भी अवेयरनेस के लिए कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं, न केवल कल्चरल प्रोग्राम्स बल्कि वहां पर लोगों को विजिट कराए और एक हेरिटेज के नॉलेज का जो एक्सपर्ट होता है, जैसे नॉलेज वर्कर के रूप में एक उनको बताया जा सके अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में। जैसे विदेश से तो बहुत से लोग जो बनारस आते हैं वो बहुत 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 अधिक फैसिनेट होते हैं, क्योंकि अगर आप यूरोप के तमाम देशों में अगर विजिट करें तो उनका 16वीं शताब्दी, उनका 15वीं शताब्दी, उनका पुराना सब नहीं है। जैसे इंग्लैंड वगैरह में देखेंगे तो उन्होंने फिर इधर भी बहुत अधिक कंजर्वेशन किया, अपने गांवों का कंजर्वेशन किया, अपने विभिन्न इलाकों में जो उनके भवन हैं उन्होंने फिर नदियों का, पर्वतों का, पहाड़ों का, उनके यहाँ भी बहुत जबरदस्त कंजर्वेशन वगैरह के मूवमेंट चले। लेकिन बहुत सी चीजें उनके मॉडर्नाइजेशन ने या इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन फिर भी इन्हीं सबके बीच में, जैसे अगर आप रोम को विजिट करें, जो वेटिकन शहर है जहां पोप रहते हैं, तो पूरा का पूरा जो आपको 12वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी या उसके पहले का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको प्रिजर्व मिलेगा, वहां कोई नया निर्माण नहीं कर सकता है। इसी तरह से अगर आप मक्का वगैरह में जो लोग विजिट करते हैं, अब मक्का में एक खास किस्म का प्रिजर्वेशन है कि वहां कोई बस नहीं सकता है। और जो भी मोहम्मद साहब ने जिस तरह से उस स्थल को बताया कि ये पवित्र स्थल है और जिन लोगों में पूरे विश्व में आस्था है वहां विजिट करते हैं तो उसको एक तरह से प्रिजर्व करते हैं। तो बनारस के बारे में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यहाँ की इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट है, जिनको विजिट करके, जिनके बारे में बहुत सी जानकारी खुद जो मैनेजमेंट का प्रोफेशनल है, जो आप लोग हैं, आपको जान करके फिर लोगों को बताना पड़ेगा। फिर आपको और भी साथ में जो बनारस की तमाम प्रॉपर्टीज हैं उनसे आपको परिचित होना पड़ेगा। तो बहरहाल मैंने आज का जो लेक्चर था वो यही था कि कैसे सोशल अवेयरनेस के बढ़ाने की क्या क्या एजेंसीज हैं और कैसे बढ़ाया जाए जिससे हम अपने हेरिटेज के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन को कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूं कि अगर और कुछ किसी को पूछना हो या कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, नहीं तो आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड किया जाए। ये लेक्चर YouTube पर भी आ जाएगा, तो आप लोगों को भेज भी दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इसे देख लीजिएगा। जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाए वो लोग भी देख लेंगे और इसको फिर हम लोग आगे के और भी क्या बातें होंगी, कैसे टाउन का प्रिजर्वेशन वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है, और हमारी जो पांडुलिपियां हैं उनके कंजर्वेशन का क्या प्रोसेस है, इन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए कि आप लोग क्लास अटेंड किए और आपने भाग लिया, फिर मैं आज अपना क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं तो सोच रहा था आप लोग थैंक यू नहीं बोलेंगे क्योंकि गुड बड़े डे सर। मौनी बच्चे हैं आप लोग। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.